Then the other characters that we include while classifying the animalia, that include like digestion. Digestion in the animals can be intracellular, means occurring within the cells. Occurring within the cells as in case of porifera, sponges. तो इनमें जो भी digestion होता है that will take place within the cells. They have the specialized cells for that. That will be involved. Then it can be extracellular. Extracellular means the digestion will occur outside the cells. Means enzymes are being released out of the cell. So that's why the digestion is occurring outside the cells. So that will be in case of like इसी में भी कह सकते हैं like in case of Annelida, Arthropoda, Mollusca, Chordata, they all will be having extracellular. Should be clear that as far as this phylum is concerned, Cnidaria, it has got both the types of digestion. Means it is having extracellular as well as intracellular. इसमें दोनों टाइप का डाइजेशन रहेगा. First it will be having extracellular and then it will be having intracellular. Then for digestion the animals can have the alimentary canal, and whenever the alimentary canal is present, the alimentary canal can be complete or it can be incomplete. It can be complete or it can be incomplete. Complete alimentary canal means that the canal is having a separate mouth and separate anus. Mouth and anus are separate. So then we say it's a complete alimentary canal. Like we can say in case of Annelida, Arthropoda, Mollusca, Chordates, so they all having the complete alimentary canal. When we say incomplete, incomplete means so here only one opening is present and the same opening is acting as mouth as well as anus. So in that case it will be termed as incomplete alimentary canal. Clear? So incomplete alimentary canal present in case of flukes, like that will be included under the phylum Platyhelminths. So alimentary canal can be complete or it can be incomplete. Digestion can be intracellular or it can be extracellular. Next is respiration. Respiration, that's related with the exchange of gases, and as per respiration the animals can be anaerobic, aerobic. Anaerobic means living in the absence of oxygen. They don't require oxygen. So that will be in case of those which are endoparasites, those living as parasite within the body of the other animals. Like that will include various flukes can be there, the tapeworm can be there. So they will be anaerobic. They are living in the absence of oxygen. And aerobic means they require oxygen, to living in the presence of oxygen. Now to get the oxygen, they can have the various methods of obtaining the oxygen. Like these can be cutaneous, means through the body surface. Like in case of earthworm, we can say earthworm is receiving the oxygen from the body surface. So means we'll be having the cutaneous respiration.
Then it can be tracheal respiration. Tracheal respiration, that's a network of air tubes. Network of air tubes in the body, that's a tracheal respiration, and that's present in case of, we can say, as in case of insects. Then can be branchial. Branchial means having the gills with them. So whenever the gills are present for the respiration, that type of respiration we call as the branchial respiration. Then the respiration can be pulmonary. In case the animals are having lungs with them, like we have the lungs, so we have the pulmonary type of respiration. So that can be the various categories as per the respiration is concerned. Then after respiration, the next we can include is the circulation. Circulation, that is meant for the distribution from one part of the body to the other. Now, as per the circulation, circulation may, these can have, like we can say, parenchymal circulation, means parenchyma is involved with the circulation. Remember, अभी जब हम बात कर रहे थे प्लेटीहेल्मिन्स की, तो उसमें हमने बात किया था कि प्लेटीहेल्मिन्स आर एसिलोमेट, क्योंकि उनका बॉडी क्या था, बॉडी कैविटी वाज फिल्ड विद द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कौन सा, पेरेन्काइमा. तो इसमें क्या रहेगा, पेरेन्काइमल सेल्स दिस वे. तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दैट विल बी मूविंग फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट. So that is, it is from cell to cell conduction. Whatever needs to be distributed, it will be moving from one cell to the next, to the next, to the next, means parenchymal type of circulation, as in case of platyhelminths we can say. So that can be in case of then this can be the body cavity type of circulation. Body cavity type of circulation means here, that's a body cavity, and this body cavity is filled with body fluid, and that body fluid keeps on moving in the entire body, and along with this fluid, the various components, they get distributed from one part to other. So that we call as the body cavity type of circulation, that we can say in case of nematodes. Next can be the blood vascular system. Blood vascular system means they are having the blood vessels. Blood vessels are present, and through the blood vessels, the blood will be moving. Now this blood vascular system, of course, it requires the blood vessels. It will require the pumping organ, that's a heart. Heart will also be there. So blood vascular system will be having the blood vessels, the pumping part, and this blood vascular system can be of two categories. It can be open type, or it can be closed type. Open type means what? Okay, suppose that's a tissue, right? That's a tissue. The blood vessel is coming, it's carrying the blood with it, but it is ending like this. Then the blood is being collected.
means the blood will be moving and coming out of the blood vessel and will be coming in direct contact with the cells. Normally what we say that all the exchange occurs through the capillaries, but here we are not finding any capillary. Means what? Capillaries are absent. So when the capillaries are absent and the blood comes in direct contact with the cells, this type of system we call as the open type of circulation. No capillaries, blood coming in direct contact with the cells. So direct exchange is going on between the cell and the blood. And this blood is what? Blood is nothing but we can say it is as a coelomic fluid. We can say it is the tissue fluid. That's why we also use the term hemocoelomic fluid. Hemo means blood, coelomic means related to coelom, because now it's present in the cavity, open form में present है. That's why we call it as a homocoelomic fluid. तो homocoelomic fluid we can also use for the blood के लिए use कर सकते हैं. And for the same reason हम कह सकते हैं कि जो इनका body cavity होगा, their body cavity will be filled with the blood. So that's why the body cavity will be called hemocoel. Coelom filled with the blood. Hemocoel. The fluid will be called as a hemocoelomic fluid. So this type of circulation we call as the open type of circulation. And in this open type of circulation, the blood flow will be slow, blood pressure will be low because it's coming in open. In closed type, the blood is coming and that's a tissue part. Now here the blood is moving through the capillaries only. Means it is not coming in direct contact with the cells. So all the exchange has to take place through the capillaries only. So this type of circulation we call as the closed type. So the difference between the open type and the closed type is clear. When we say open type means no capillaries. When we say closed type, capillaries are present. Here the blood flow will be slow. Here the blood flow will be fast. Blood will be moving with pressure. And blood coming in direct contact with the cells. Blood is not coming in direct contact with the cells. So that's the two types, open type and closed type. Open type, we can say the example as in case of arthropoda, as in case of molluscan we can say. Closed type we can say as in case of chordates में कह सकते हैं. Then we can say in case of course some exceptions are there. Chordates में कह सकते हैं. Then we can say in case of annelida. And then of course mollusk maybe there are some exceptions that we'll discuss while discussing this phylum, which are having the closed type. Though broadly mollusks are having the open type of circulation, but some mollusks are having the closed type of circulation also. That will take up with the phylum only. So that's the blood vascular system. So as for the circulation is concerned, they can be having parenchymal, can be having body cavity type of circulation, or they can be having the blood vascular system. Is it clear? So that's regarding the circulation. Now after circulation, the next is excretion. Excretions means passing out of metabolic waste. So first of all, the organisms, the animals can be
A monotelic can be ureotelic, can be uricotelic. When we say a monotelic means passing out ammonia as the metabolic waste that can be passed out in the form of ammonium ions. So passing out ammonia as the metabolic waste, that group of animals we call as the monotelic. Ureotelic, passing out urea as the metabolic waste. And uricotelic, passing out uric acid as the metabolic waste. This all depends upon the availability of the water, how much water is available, and depending upon the habitat of the animal, accordingly the category will be there. Now, these metabolic waste can be passed out through body surface even. So it can be simply by diffusion through the body surface, like ammonia that can be passed out. It can be by diffusion, or they can have the specialized structure with them. The specialized structure, of course, that will take up with the individual phyla के साथ साथ बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से हैं. Like जैसे broadly अगर हम बात करें तो you must be knowing about जैसे Malpighian tubules. बताएंगे किसके अंदर होता है Malpighian tubules? You already have read Malpighian tubules. Malpighian tubules as the excretory structure in case of, yes, in case of insects. Malpighian tubules are there. Then they can be green glands can be there. So different type of excretory structure can be there, and moreover, of course, you know, जब हम कॉर्डेट्स की बात शुरू करते हैं तो वहां पे तो खैर क्या स्टार्ट हो जाता है, वर्टिब्रेट्स में स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो वहां से स्टार्ट हो जाते हैं क्या, किडनी पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ excretory structures can be there. So that's with the excretion. Then after excretion, now the next is with the nervous part. Right? Now the next is nervous part. When we say nervous part, the first thing it should be clear that in some animals there are no nerve cells. Nerve cells absent होती हैं. Nerve cells है ही नहीं. Nerve cell ना होने का मतलब क्या कहेंगे? There is no nervous part. Nervous part है ही नहीं इसके अंदर. तो nerve cells can be absent. Example, as in case of porifera. So as per the porifera or the sponges are concerned, we can say that the porifera or the sponges are without any nervous part. Then otherwise, when the nervous system is present, so it can be just present as the nerve cells. ये सिर्फ nerve cells की फॉर्म में हो सकता है. Nerve cells जो हैं, they can form नेटवर्क. एक नर्व सेल का दूसरे के साथ में लिंकअप, तो उसे पूरा क्या बन सकता है, नेटवर्क बन सकता है. वी कैन से इट्स अ नर्व नेट प्रेजेंट. नर्व नेट वी कैन से इन केस ऑफ निडेरिया में बात कर सकते हैं, हाइड्रा में कह सकते हैं. तो हाइड्रा में पूछा जाए कि नर्वस पार्ट में क्या होगा, विल से नर्व नेट्स आर प्रेजेंट. देन the same nerve cells can be grouped to form ganglion. Now, what is ganglion? Ganglion is the group of nerve cells. Nerve cells का group बन गया, उसका हम क्या नाम दे देंगे, that we call as the ganglion part. और ganglions को लिंक करने वाले commissures, कनेक्टिव्स, ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं, कॉमिशर्स एंड कनेक्टिव्स. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? कॉमिशर, इट इज द लिंक बिटवीन सिमिलर गैंग्लियन.
सिमिलर गैंग्लियन को आपस में जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, उसको क्या नाम देंगे? दैट वी कॉल एज द कॉमिशर. एंड व्हेन वी से कनेक्टिव, कनेक्टिव मीन्स द लिंक बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैंग्लियन. सपोज जैसे मैं कहता हूं कि ये गैंग्लियन है, ये भी कोई गैंग्लियन है, ये भी कोई गैंग्लियन है. सपोज मैं कहता हूं ये सेरिब्रल गैंग्लियन हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं. सपोज जैसे ये हो गया पेडल गैंग्लियन हो गया, ये मान लो विसरल गैंग्लियन हो गया. ठीक है, ये भी पेयर में प्रेजेंट है, ये सिंगल प्रेजेंट है मान लो. अब इनके बीच का जो लिंक होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ कॉमिशर, बिकॉज दैट्स अ लिंक बिटवीन द सिमिलर गैंग्लियन. तो विल कॉल इट एज द सेरिब्रल कॉमिशर. और जैसे यहां पे इसका लिंक की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दे आर द डिफरेंट गैंग्लियंस. तो इसको क्या नाम देंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज द कनेक्टिव. तो इट कैन बी गैंग्लियन, कॉमिशर्स, कनेक्टिव्स इस फॉर्म में हो सकते हैं. or it can be present in the form of nerve cord, or it can be present in the form of nerve cord. nerve cord की जब बात आती है तो nerve cord में nerve cord animals के अंदर it can be double, solid, ventral. डबल का मतलब हो गया प्रेजेंट इन द पेयर, पेयर में प्रेजेंट है. सॉलिड कहने का मतलब बीच में कोई कैविटी नहीं है, इट्स अ सॉलिड स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है. तो ये जो कैरेक्टर है डबल, सॉलिड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये अगर प्रेजेंट है तो ये कैरेक्टर होगा किसका? दैट विल बी इन केस ऑफ दैट विल बी इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. ये नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टर होगा. और वही अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर कैसा रहेगा? इट विल बी सिंगल, नॉट डबल. कॉर्डेट्स में कैसा रहेगा? सिंगल रहेगा. सॉलिड की जगह क्या रहेगा इसके अंदर? हॉलो. हॉलो कहने का मतलब बीच में कैविटी होगा, कैविटी के अंदर लिक्विड भी होता है. यू मस्ट बी नोइंग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हम कहते हैं, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पता है ना? तो वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा. कैन बी सिंगल, हॉलो एंड विल बी प्रेजेंट ऑन कौन सी साइड में? डॉर्सल साइड. तो इट कैन बी सिंगल, हॉलो, डॉर्सल. अगर इस टाइप से प्रेजेंट है तो ये कैरेक्टर किसका रहेगा? दैट्स अ कैरेक्टर ऑफ द कॉर्डेट, राइट? तो नर्व कॉर्ड कैन बी डबल, solid, ventral, that will be the characteristic of the non-chordates, or it can be single, hollow, dorsal, that will be the characteristic of chordates. Is it clear? So that's regarding the nervous part. Similarly, it's with the sensory part. So with the sensory part can be absent, sensory cells can be absent. Now the sensory cells will be absent in case of those animals where the nervous part is absent. So that means in case of porphyrids. Otherwise, all other are having the sensory structures, and these sensory structures vary from phylum to phylum. तो जैसे किसी के पास हम कह सकते हैं some have got the papilla, some have got tentacles, some have got antenna. तो इस टाइप के ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं they are all sensory structures. तो वो हम सारे एक एक जब फाइलम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ सारे डिस्कस हो जाएंगे उसके साथ में. तो दैट्स विद द सेंसरी पार्ट. सेंसरी पार्ट के बाद अब नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर दैट्स विद द रिप्रोडक्शन पार्ट. नाउ एज फॉर द रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, रिप्रोडक्शन में इट शुड बी क्लियर
डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन है। तो एनिमल्स में इन जनरल अगर हम बात करते हैं, दे शो टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इट कैन बी एसेक्सुअल और इट कैन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है कि जिसके अंदर देयर विल बी नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, तो दैट कैन ऑकर बाय बडिंग के साथ होता है, किसी में फिशन के साथ होता है, किसी में बडिंग के साथ होगा, फिशन के साथ होगा, सो दैट विल बी द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी इंडिविजुअल फाइलम के अंदर किसमें कौन से वाला रहेगा, दैट विल डिस्कस फाइलम वाइज, बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। एज वेर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, फॉर दैट इट शुड बी क्लियर कि एनिमल्स कैन बी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ये तो खैर पता है कि व्हेन वी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस गैमीट फॉर्मेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। सो नाउ एनिमल्स कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब क्या होगा, यूनि मींस सिंगल, सेक्सुअल सिंगल सेक्स फॉर्म इज प्रेजेंट, सिंगल सेक्स इज प्रेजेंट, मींस हियर वी कैन से मेल and female are different. So each organism is having a single sex. Only one sex will be present, either male or female. Means when the sexes are separate. So when the sexes are separate, so that condition we call as the unisexual condition. Bisexual means both the sexes are present in the same organism. Both sexes in the same organism means it is hermaphrodite. Hermaphrodite means we can say sexes are united. We'll say sexes are united. Or we can also say that as far as these unisexual organisms are concerned, for that we also use the term डायोशियस। डायोशियस कहने का मतलब हो गया टू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, वन विल बी मेल, अदर विल बी फीमेल, सो दैट कंडीशन वी आर कॉल्ड एज द डायोशियस कंडीशन। तो ये डायोशियस कंडीशन रहेगी इसके साथ। तो वी कैन कॉल इट यूनिसेक्सुअल, वी कैन कॉल इट डायोशियस, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, और वी कैन से सिंपली सेक्सेस आर सेपरेट। एंड व्हेन वी से बाइसेक्सुअल मींस हर्माफ्रोडाइट, तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे हम मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब हो गया ओनली वन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एंड दैट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग द मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल पार्ट, सो दैट वी कॉल एज द मोनोशियस। नाउ एज फार एज द फर्टिलाइजेशन इज कंसर्न, फर्टिलाइजेशन में इट शुड बी क्लियर, फर्टिलाइजेशन कैन बी self fertilization or it can be cross fertilization. Self fertilization of course will be possible in case of any hermaphrodite animal, उसी के केस में possible है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन बात करें तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट विद द यूनिसेक्सुअल, इनमें तो ऑप्शन है ही सिर्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, बट इनके अंदर भी क्या होगा, दे कैन आल्सो शो द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब हर्माफ्रोडाइट एनिमल हैविंग द मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स उसमें प्रेजेंट हैं, फिर उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी, बिकॉज कई बार इनमें कंडीशन आती है इनके अंदर, हर्माफ्रोडाइट के अंदर, लाइक प्रोटएंड्री, प्रोटगाइन कंडीशन। When we say protendry condition, protendry, prot means first, endry means male, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, मेल पार्ट मैच्योर्स फर्स्ट, पहले मेल पार्ट मैच्योर कर जाएगा। मेल पार्ट क्योंकि पहले मैच्योर कर रहा है और फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर करेगा, दैट्स व्हाई इनके केस में क्या कहेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल।
लाइक जैसे अर्थवॉर्म में कह सकते हैं, अर्थवॉर्म में कौन सी कंडीशन है, प्रोटेंट्री कंडीशन होती है। अर्थवॉर्म इज हर्मेफ्रोडाइट, लेकिन फिर भी उसमें क्या रहेगा, इट विल फॉलो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। रीजन, बिकॉज अर्थवॉर्म के अंदर कौन सी कंडीशन है, प्रोटेंट्री, मींस द मेल पार्ट मैच्योर्स फर्स्ट। प्रोटगाइनी अगर हम कहते हैं तो प्रोटगाइनी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट, गाइनी मींस फीमेल। तो इसी तरह से अगर मान लो फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, देन द कंडीशन विल बी प्रोटगाइनी। तो वेदर इट इज प्रोटेंड्री और इट इज प्रोटगाइनी, दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन विल बी देयर। इज इट क्लियर? देन इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इट कैन बी इंटरनल। एक्सटर्नल कहने का मतलब हो गया आउटसाइड द बॉडी। इफ द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी, लाइक टेकिंग प्लेस इन द वाटर, तो उसको हम क्या कहेंगे, देन इट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर बॉडी के अंदर होगा, देन विल से इट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैन बी एक्सटर्नल और इट कैन बी इंटरनल। और उसके बाद रही बात इसके अंदर एज फार एज द डेवलपमेंट इज कंसर्न, तो पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट, जायगोट में डिविजन्स होते हैं, क्या बनते हैं, क्या कहते हैं इनको डिविजन्स को, क्लीवेज। क्लीवेज के बाद पहले मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी हम बात कर भी रहे थे, पहले ब्लास्टोसील वाली बात कर रहे थे। तो ब्लास्टोसील जो है वो प्रेजेंट होता है किसके साथ, ब्लास्टुला के साथ में। तो ब्लास्टोपोर अपीयर हो जाता है, गैस्टुला बन जाता है। ये सारे स्टेजेस हैं। इसके बाद आगे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, कंप्लीट एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल बी देयर। ये सब डेवलपमेंट की स्टेजेस रहती है ना। इसमें डेवलपमेंट जो है इट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट। व्हेन वी से डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया जो इसमें यंग वंस होंगे दे आर सिमिलर टू द एडल्ट्स, मतलब देयर इज नो लार्वल फॉर्म, बीच में कोई अलग से लार्वा नहीं बनता। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट वी कॉल एज द डायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड व्हेनेवर बीच में कोई लार्वल फॉर्म बने, जैसे पता है फ्रॉग के अंदर बीच में लार्वा बनता है, कौन सा लार्वा होता है वो, दैट इज टेडपोल। टेडपोल लार्वा अगर जैसे आता है तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट। तो अगर बीच में लार्वल फॉर्म बनेगा, larval form is present, then we call it as the indirect development, and if there is no larval form, then we call it as the direct development. Then the animals can be oviparous, viviparous. When we say oviparous, means these are egg laying. The egg laying animals that we call oviparous, इसमें सारा जो डेवलपमेंट होगा दैट विल बी टेकिंग प्लेस विद इन द एग। एग के अंदर ही डेवलप होगा, क्योंकि एग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग के अंदर प्रेजेंट होता है योक, यू नो द येलो पार्ट, योक, दैट इज फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट, वो सारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड विविपेरस, दोज विच डायरेक्टली गिव राइज टू young ones, which directly produce the young ones, उनको हम क्या कहेंगे, that we call कौन सा कैटेगरी, viviparous। तो it can be oviparous और it can be viviparous। तो oviparous कंडीशन, viviparous कंडीशन, दो कंडीशंस रहती हैं इसके साथ में। तो इसके अंदर क्या होगा, they will be having the placenta। पता ही है मैमल्स के अंदर जब साथ में कहते हैं, मैमल्स में जनरली क्या कहेंगे, प्लेसेंटा प्रेजेंट। तो ऑल द नरिशमेंट टेकिंग प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा विद इन द मदर्स बॉडी, यानी कि वंस द डेवलपमेंट इज कंप्लीट देन ओनली इट विल बी फॉलोड बाय द बर्थ। सो दैट कैटेगरी ओविपेरस, विविपेरस। एक और कैटेगरी मेंशन करते हैं, दैट इज दिस इज ओवो
viviparous. Means it is the in between category of the two. तो originally these are oviparous, है तो ये भी oviparous, but the only difference is that the eggs are not being deposited outside. They are not being deposited outside the body. The eggs are being retained within the mother's body for development. Remember, the nourishment is taking place through the किसके through? Yolk के through ही nourishment हो रहा है. But the difference is कि only the difference is the eggs are being retained within the mother's body. Right? So animals can be oviparous, can be viviparous, and in some categories they can be ovoviviparous also. बाकी एक पॉइंट और इसमें डिस्कस कर लें, then it will be complete. Regarding the eggs बात कर रहा हूं मैं. Eggs में like we can say, ये इसलिए बात कर रहा हूं because when we'll be discussing the different phyla, तो these terms we are going to use. तो जैसे alacithal, microlacithal, mesolacithal, megalacithal. Alacithal means there is no yolk. Microlacithal means very less amount of yolk is present. Meso means moderate amount of yolk is present. And megalacithal, also called macrolacithal, means a large amount of yolk is present. And कई बार इन कैटेगरी को इकट्ठा ही रखा होता है. Alacithal, microlacithal means no yolk or very little yolk is present. But alacithal, microlacithal, mesolacithal, megalacithal, all these terms we use with respect to the eggs. How much yolk is present with the egg. So these were all the general characters of the Animalia on the basis of which we classify them. So after completing, we have to start with the phyla. But यहाँ पे एक चीज मैं इसमें क्लियर कर दूं कि will not be starting with the first phylum of the Animalia, but instead we'll be starting with the protozoa. हम पहले प्रोटोजोआ शुरू करेंगे. Protozoa, of course, that comes with the protista, but that protista part, बाकी सारा पोर्शन जो है प्रोटिस्टा का, that will be in the botany classes के अंदर होगा, but protozoa portion जो है that will be covered in the zoology classes. तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, we'll be starting with the protozoa. Right? Thank you.